हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द पेविलियन। मैं हूं फखर-ए-आलम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड द ARY Zap app and our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023 from India. The news coming out of New Delhi is that Bangladesh have won against Sri Lanka. It has been a very interesting match with a little bit of controversy. We're going to be talking about that. Let me bring in my panelists. I've got four outstanding gentlemen here in the pavilion with me, four former captains, four great minds of the game of cricket, and four experts who have predicted games with such amazing accuracy that it's almost unbelievable. I've got first up a very good fielder, great runner between the wickets, a great player of spin bowling, also captain Pakistan and took us to many victories. Shoaib Malik, good evening. Assalamu alaikum. Good evening. Walaikum salam. Assalamu alaikum everyone. With that, I've got one of the most dependable batsmen. Every time Pakistani batting order went out of order, he would stand tall on one end and try to save whatever was left. The most successful test captain in Pakistan's test cricket history, I've got Misbah. Good evening and assalamu alaikum, Misbah. Good evening, assalamu alaikum. 2 straight thumbs and 8 crooked fingers. One of the finest wicket keepers that Pakistan has had. Captain Pakistan, known as the man of crisis, but we call him lovingly the silver fox of the pavilion. Moin Khan, good evening and assalamu alaikum. Good evening, walaikum assalam, assalamu alaikum everyone. And with that, ladies and gentlemen, a poet par excellence. आपने उनके मुख्तलिफ हमने यहाँ पर शेयर किए हैं पेविलियन में, उनकी शेर व शायरी के ये एक बेमिसाल एक कहानी है पूरी की पूरी. But he is actually undoubtedly, unquestionably the cricket royalty. And he's with us here back in the studio. Great to have him back. Please welcome the Sultan of Swing, the king of all-rounders, Wasim Akram. Wasim, good evening, assalamu alaikum, welcome. Good evening. Adab, adab, good evening, adab. Assalamu alaikum, Irshad. Yep. You know, it has been just fantastic, Wasim. All these golden things that you've brought us. From Chichku Chichganderiya to, you know, Pidi Pulchune to Chitta Tattoo. So the whole thing just keeps going on and on and on. It's just fantastic. A lot of things we can't share with just adding up. Huh? It's adding up. It's adding up. I know. आप तो बहुत करीब हैं, आपकी किताब छपने वाली है. After the 19th, you guys should thank me officially. Yes. जो आप pearls of wisdom मेरे से सीखे हैं एक महीने सवा महीने से हम जो इकट्ठे एक दूसरे के को बर्दाश्त करके देख रहे हैं. आगे भी हम लोगों ने सिखाने की कोशिश की है. जी. आधों की लड़ाई हो गई आपस में. It's not that easy, by the way. It's not easy. Please, Don't try it at home. Yeah. Do try at home. Yes. एक लड़ी में परो दिए सारी. हाँ. किताब छपने वाली है, मैं बता रहा हूँ. दीवाने अकरम छपने वाला है भाई. बसी में उधर जरा हल्का सा पिंच करें, बंदा सुते जाग गए. मैं क्रिकेट के शौक के लिए आया हूँ. ओए. Ouch. That hurt, Misbah. That hurt. He's such a party pooper. It's not even funny, man. Anyway, let's talk about the game that we had today. बहुत ही जबरदस्त मुकाबला रहा. आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं match summary. This is how it went down today. It was Sri Lanka that went into bat first, 279 all out in 49.3 over. But Sri Lanka there with a superb century, 108. But Nisanka also contributing 41, and you have a great innings there by Samara Vikrama, 41. De Silva putting in 34. Now, very nice, impressive bowling card for Bangladesh. They would be happy about that, except for Tanzeem's 80 runs of the 10 overs. However, in reply, it was Bangladesh that set themselves up for a victory they will remember, because it was an important game for them. 41.1 overs, they did 282 runs. Shantu there with 90, the captain Shakib Al Hasan with his 82, Litton Das with his 23, and Mahmudullah with a very important 22. Madhushanke, pick of the bowlers, he's been very, very impressive throughout this World Cup with those 3 wickets. Angelo Mathews there with the 2 for 35. Unfortunately, it was not Sri Lanka's day today. Tikshana there, 2 for 44. He was a little disappointed. Bangladesh winning this by 3 wickets. So congratulations, Bangladesh. और आइए उसके साथ ही नजर डालते हैं point table पे. So this is how your points table is looking at the ICC Men's Cricket World Cup India 2023. India undefeated, right on top with 16 points. South Africa trailing. Both the teams have already qualified for the semi-finals. They're sitting there with 12 points. Australia now trailing in at 3rd position with 10 points. New Zealand with 8. Pakistan with 8. Afghanistan with 8. Now there are 3
teams there with 8 points each. But look, the net run rate of New Zealand is the best. It's right on top, 0.40. Pakistan trails with 0.04 net run rate. And then it's Afghanistan with the minus 0.33 run rate. Now, Bangladesh there sitting below Afghanistan, Sri Lanka with 4 points each. The Netherlands also with 4 points, and England, the defending world champions, are holding on to their traditional position in this World Cup, which is the bottom of the table. And now here's the situation. The two teams at the bottom will not qualify for the Champions Trophy. So England, well, I don't think England has much left. They've got 2 games left. Can they get out of that position? And how this goes down, we'll find out, because there's still a lot of games to go in this World Cup. And that's your points table this evening. तो आइए अपने एक्सपर्ट से बात करते हैं. आज एक्सपर्ट्स ने बड़ी जबरदस्त प्रेडिक्शंस दी हैं वसीम. You weren't here. प्रेडिक्शन दी आप लोगों ने आज? मैं तो था नहीं सुबह. वो जो आपने फोन पे बताई थी. मैंने बिल्कुल नहीं बताई. कोई बात नहीं हुई थी फोन पे, ऐसी कोई गल नहीं थी. व्लॉग में हमने देखा कि आपने बोला केड़े व्लॉग ही देख ले. हां बोले यार दसो पहले मैंने क्या बोला कि आपने दसा श्रीलंका आपका व्लॉग. पहले कोई व्लॉग नहीं है. मैं दसा इन तीनों ने श्रीलंका बोला था जीतेगा. इतना नहीं लादो साडा ना लादो की मतलब ना ही ताड़ा है. मेरे को लिखे है ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ. It's right here, man. I've got evidence. On a serious note, I also thought Sri Lanka were the favorites, so guys take it easy. But I think Sri Lanka they didn't do justice to themselves in this game. स्पेशली ऑन दिस पिच, जो भी तक वर्ल्ड कप की सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाली पिच है. इस पर कम से कम 350 350 के दरमियान स्कोर करना चाहिए था इनको. इनके एक बैटर श्रीलंका ने सिर्फ 100 किया. आई थिंक फर्स्ट टाइम वो इस वर्ल्ड कप में फॉर्म में आया है. बट प्लेयर्स लाइक परेरा हु डिडंट डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड कप. द स्किपर कप्तानी से पहले 100 भी किया था. जब से कप्तानी उनका कप्तान इंजर हुआ, कप्तान बना है, ही वॉज ऑल ओवर द शॉप. वी स्पोक अबाउट हिम इन द अर्लियर शोज एज वेल. And then Sadira is one of my favorite players. He's about 29-30. He has been playing on and off for Sri Lanka for a long time. I mean 41 पे सेट होके वो की जगह थी आउट होने वाली. अगर श्रीलंका 100 ना करता तो मेरा नहीं ख्याल इनका 279 भी होना था. But congratulations to Bangladesh for winning their first game against Sri Lanka in these World Cups. They played well, they bowled well. Everybody chipped in. The skipper led from the front, got 2 wickets. And I think, and then we saw the dew factor was massive. The pitch looked like a cement pitch when they came out to bat, although they started losing their wickets again. Finally, Shanto got some runs, and skipper came out with all that incidents we'll discuss. Yeah, I was just going to say, Wasim, don't you think that could have been the 300 marker where they missed because of the Angelo Mathews incident? Had he gotten into bat and had he batted for a little while, it could have been a different. Probably total. more. Because जिस स्टेज पे वो आया था वो उसके लिए आइडियल सिचुएशन थी. And we'll talk about that incidents in a little while. First, about the game. It's all Sri Lankans themselves to blame. Once they scored 279, it was only a matter of time. And Bangladesh again, these guys, I mean, Liton Das looked okay. एक कैच भी ड्रॉप हुआ है. I mean, he's been playing for Sri Lanka for more than 10 to 12 years. Tanzeed got 150 maybe in this tournament, looked good, but is he good enough at that level, consistent level? I don't think so. Maybe in future, yes. There's a young guy, and the senior pro Mushfiqur didn't got runs. Mohammedullah got 20 odd, and then of course captain and the main player did the trick for them. So well done Bangladesh. Yeah, well done Bangladesh. Their bowling also looked very impressive today, even though थोड़े से runs उन्होंने कुछ जगहों पे लीक किए हैं. But in this pitch, on this pitch, the way that you said कि 300 की pitch होनी चाहिए थी 350 की, their bowling was really really good throughout the day today, Misbah. बिल्कुल. इस पिच पे 300 से कम रन्स पे रोकना टीम को, मेरे ख्याल में वहीं से उनका मैच एक बन गया. श्रीलंका शायद ये सोच रहा था कि आउट ऑफ फॉर्म है इनकी बैटिंग, और कुछ सोचा उन्होंने कि ठीक है अगर हम इस 270-80 पे पहुंच जाएं तो इनफ स्कोर होगा. लेकिन आपको हर मैच में उन कंडीशंस को देखना है, और टोटली वो रॉन्ग थे. मुझे लगता है कि जो मेन वसीम भाई ने भी बात की है, एक तो कुशाल परेरा, कुशाल मेंडिस, इनकी कंट्रीब्यूशन बिल्कुल ही. मेंडिस ही वाज इन फॉर्म और सडनली पता नहीं क्या हुआ. आज भी एक तो ये होता है कि आप रुके ना, आप सेट ना हो या खड़े ना हो, आपको टाइम ना मिले क्रीज पे. 30 बॉलें 19 रन, टोटली उसका वे ऑफ प्लेइंग ही चेंज हो गया. आफ्टर कप्तान बनने के पहले वो अटैक कर रहा था कि हर बॉल ऐसे लग रहा था कि बॉलरों के पीछे जा रहा. सडनली
ही इज़ जस्ट सर्चिंग फॉर द बॉल, रोक रहा है, छोड़ रहा है, कुछ भी नहीं। वो मेरे ख्याल में वो जो पार्टनरशिप थी उसमें जो वो वहाँ पे वो खेले हैं, उस वजह से भी काफ़ी उनको नुकसान हुआ है। बाद में तो ठीक है, एंजेलो मैथ्यूज़ की जो विकेट गई है वो एक अलग चीज़ है, बट मोमेंटम कहीं ना कहीं वहाँ पे शिफ्ट हो गया। Let me bring this to you conversation because you as a wicket keeper was also captain. क्या as a wicket keeper कप्तानी करना कुछ ज़्यादा बर्डन आ जाता है आपके ऊपर कि आपकी बैटिंग भी इफेक्ट होना शुरू हो जाती है? Let me add as well. जी प्लीज। सो अगर कप्तानी पहले ना की हो और एकदम कीपर को कप्तानी मिल जाए तो की हो तो आइडिया होता है, अगर ना की हो एकदम मिल जाए तो कोई फर्क पड़ता है? इस लेवल पे वसीम है, ऑफ कोर्स प्रेशर तो बहुत ज़्यादा आ जाता है। मेरे साथ भी हो चुका है ये, इस तरह जिस वक्त मुझे कप्तान बनाया गया तो बैटिंग मेरी थी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, प्रेशर आ गया था ज़्यादा, एडिशनल प्रेशर। मिसबा ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, जब भी कप्तान बैटिंग करो उसको कभी कप्तानी का नहीं सोचना चाहिए। स्कोर बोर्ड पे आदत होती है, आदत थोड़ी हैबिट, बट स्ट्रेट अवे नहीं होता। लेकिन वाकई इस पूरे टूर्नामेंट में जब से कप्तान बने बिल्कुल टोटली नज़र आया है कि शैटर्ड हो गया उनका कॉन्फिडेंस, जो भी था, जो उन्होंने प्रीवियस मैचेस के अंदर जो फर्स्ट 4 इनिंग्स में जो जिस तरह एक्सप्लॉइट किया था अपने शॉट्स ऑल अराउंड द ग्राउंड खेले थे हर ओपोनेंट जो शुरू के 4 मैचेस है। लेकिन ये प्रेशर किसी वक्त भी आ जाता है कि जो हारना ये सबसे बड़ी जो चीज़ होती है एज ए कैप्टन, डिफीट बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। उससे आपका बॉडी लैंग्वेज हमने देखा है एट टाइम्स, बाबर पे भी नज़र आता है हमें। आई थिंक बीइंग अ कैप्टन वर्ल्ड कप नेचुरली उसका जो प्रेशर आया है ना उसके ऊपर, उसको कोप अप नहीं कर सका सिचुएशन के साथ, इस वजह से इसमें बिल्कुल मोइन भाई ये थोड़ा सा ऐड में डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होती हैं। कुछ लोग ये होते हैं कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो उनकी परफॉर्मेंस एकदम बेहतर हो जाती है, राइट, क्योंकि वो उसको चैलेंज लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर फ्रीडम से खेलना चाहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि कुशाल मेंडिस की परफॉर्मेंस आफ्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो वे ऑफ प्लेइंग ही उसका चेंज हो गया। तो फ्यूचर में आई थिंक दे हैव टू जस्ट टू ऑल 3 ऑफ द एक्स पाकिस्तान सुपर कैप्टन्स, क्वेश्चन इज भूल गया मैं थोड़ा सा ऐड करता हूँ फिर आपको याद आ जाएगा। मिसबा भाई ने बात की कैप्टनसी की, आपने सवाल पूछा। देखें, जब आपके पास रिसोर्सेज जो आपके प्लेयर्स हैं, अगर आपके पास मैच विनर्स हैं आपकी साइड पे, आपकी साइड में, तो फिर कैप्टन 19-20 भी है तो वो टेक ओवर कर लेते हैं क्योंकि आपके पास मैच विनर्स होते हैं। लेकिन जब आपके पास मैच विनर्स 1-2 ही हो तो फिर लीडर का स्ट्रांग होना, उसको समझ होना बहुत ज़रूरी होता है, और वो हमने देखा कि इस टीम में नहीं है। बांग्लादेश की टीम में कैप्टन अच्छा है बट उसके पास रिसोर्सेज नहीं है। श्रीलंका में जो है कैप्टन और साथ में वो मैच विनर्स भी नहीं है, तो वो चीज़ कवर नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से ये स्ट्रगल मिल रही है। बहुत सारे ऐसे कैप्टन्स हैं, दे कैन गेट अवे इफ़ दे हैव मैच विनर्स इन देयर साइड, तो वो कभी ऐसे डिसीजन भी जो है वो आपके मैच विनर जो है वो सेट कर देते हैं। आखो याद आ गया। हाँ, क्रिकेट में जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, ज़ाती पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं कोई 36 दफ़ा ते कप्तान बनया तो लथियाँ 36 तो 37 एटलीस्ट। इसमें कोई बॉर्न कैप्टन नहीं होता, बॉर्न कैप्टन क्रिकेट में नहीं आ सकता, उसका आपको आके यूज टू होना पड़ता है। बॉर्न डिसीजन मेकर हो सकता है एज अ यंग किड और एज अ 25-26 ईयर ओल्ड, बट बॉर्न कैप्टन वो आपको करने से आती है टेक्निकलिटी, जितनी करेंगे उतना आपका एक्सपीरियंस, हैंडल द एक्सपीरियंस, हाउ टू हैंडल दैट प्रेशर एंड देन हाउ टू not affect that pressure, affect your game, वो करने से आती है। और अगर आपको 2 ऑप्शन दी जाएं वसीम भाई, कि जो डिसीजन मेकर है उसको कैप्टन बनाना चाहिए या किसी को ग्रूम करना चाहिए? नहीं, ग्रूम भी कप्तानी करा के ही करोगे ना, कप्तानी करेगा तो ग्रूम होगा, अपने आप कैसे ग्रूम हो जाएगा? लेकिन वो ज़्यादा टाइम नहीं ले जाएगा क्योंकि वो डिसीजन मेकर नहीं है, वो हमेशा शोल्डर ढूंढता रहेगा। नहीं, बट इवेंचुअली यू कैन चेंज पीपल एट यंग एज में बदल जाएगा। सो आई समराइज दैट, आई अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। सो कैप्टन आप बन सकते हैं, बट नेचुरल लीडर यानी कि डिसीजन मेकर, दिस हैज टू बी इन यू दैट इज एट अ यंग एज, राइट? एक और चीज़ भी होनी चाहिए कि नेचर वाइज आपकी ये ज़रूर देखना चाहिए कि रिजिलियंस कितनी है आपके अंदर एज अ इंडिविजुअल। वो कई दफ़ा वो नहीं आती किसी में, वो नेचुरली होती है कि फाइटिंग स्पिरिट कितनी है। But usually, Misbah, you pick up a captain, especially in our part of the world, in Pakistan, whoever is getting more runs, whoever is getting more wickets, kind of stuff. Am I right? इस तरीके से कोई ये नहीं देखते हम के फर्स्ट क्लास में कप्तानी की है या अंडर 19 में की है या अपनी क्लब टीम में की है,
एज लॉन्ग एज इज परफॉर्मिंग फॉर पाकिस्तान, और उसी की एग्जांपल दे सकते हैं, तो बना लेते हैं उसको। तो ये इज दिस द राइट वे टू पिक नहीं, उसमें डोमेस्टिक लेवल पे जैसे आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कैप्टन बना रहे हैं, जो रन करता है उसे आप बना देते हैं। डोमेस्टिक में भी वो नीचे से ही ऊपर जा रहा है वो वाला सिस्टम। डोमेस्टिक में भी हमारे ऐसे ही हो रहा होता है, क्लब क्रिकेट में भी, कि जिसने रन्स बनाए हैं या जिसने विकेट लिए हैं उसको कैप्टन बना दो। नहीं, ऐसा नहीं। सबसे पहले हम उसके करियर के साथ, हाँ ऐसे लोग भी हैं जो परफॉर्मर हों और साथ में कैप्टनसी उनको नहीं इफेक्ट करती है, बल्कि उनका गेम और अच्छा करती है, निखारती है। बट हमारे सिस्टम में वो निखारती नहीं है, वो एडिशनल प्रेशर लेके आती है। राइट। ये इसीलिए ना ग्रूम करना ये भी है मलिक कि आपके पास लॉट ऐसी नहीं है, अवेलेबिलिटी भी ऐसी नहीं है। वही बात है कि निचले लेवल से अंडर 13 या अंडर 16 से आपको सोचना पड़ेगा कि यार हमने ये चीज़ें जो है इनको शुरू से ही इसकी कुछ ना कुछ एजुकेशन देनी है या ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि फर्स्ट क्लास में भी जाऊँ ना तो लगता है कि यार वो जो गेम सेंस और उस तरीके से वो चीज़ें नहीं। Let me pose this question to you, Misbah, as the chairman technical committee or the technical committee. Does the technical committee actually have a document in place which says that we have to groom captains at under 16, under 19 levels? डॉक्यूमेंट तब होगा ना जब टेक्निकल कमेटी एक बोर्ड के साथ सर्टेन टाइम के लिए रहेगी। अभी तो ये आए हैं महीना पहले आए थे, वो तितर-बितर हो गई है। एक मीटिंग हुई है डोमेस्टिक, उसका तितर-बितर हो गए। Hold on, I'm just very curious. You are the chairman of the technical committee. So जो हैंड ओवर हुआ, the previous going जो भी था आपसे पहले, क्या उसने कुछ आपको हैंड ओवर नहीं किया? था नहीं। Look, Misbah, I've done all of this work already. I'm handing this over to you. Take a look at this. These are the documents. There's no such thing in the Pakistan. ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो जिस तरह जब हम आए हैं तो हमें जो टास्क मिला है, सबसे पहले वो डोमेस्टिक क्रिकेट का मिला है कि हाँ जी ट्रॉफी हफ्ते बाद ट्रॉफी है, दे आओ देन उसे दरा बदरा करो। मैं यही कह रहा हूँ ना, इट्स अनफेयर टू यू एज वेल टू जस्ट। लेकिन ये है ज़रूर। ये मैं पीछे की बात करूँगा, जब मैं एज ए हेड कोच था उस वक्त आया था और ये नदीम खान उस टाइम थे, तो इन्होंने काफ़ी चीज़ों को डॉक्यूमेंटेशन की है, ये सारी चीज़ें कि अच्छा हमने ये भी डिस्कशंस की थी कि कैप्टेंसी के लिए किस तरीके से ग्रूम करना है लोगों को, वो चीज़ें लिखी गई हैं। और लेकिन मसला ये है कि जो नीचे लोग अब इसको इम्प्लीमेंट कराने वाले हैं, जो कोचेज़ हैं या जो टीमों के साथ हैं, उनका बड़ा रोल है इसमें। उनको ये देखना है कि भाई कौन से लोग हैं जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी है। श्रीलंका में भी इस वक्त सेम यही प्रॉब्लम चल रही है। उधर भी तो स्टेबिलिटी नहीं है, तो स्टेबिलिटी नहीं है। और उधर ऑल अभी वसीम ने बताया हमें कि एक और ट्विस्ट है टेल के अंदर, अभी जिसके कि उन्होंने कहा जी वो प्रेसिडेंट से पता नहीं कहाँ से उन्होंने नहीं पूछा था, उन्हें किया था। इससे बारे में मजीद बातचीत करेंगे व्हेन वी कम बैक फ्रॉम दिस ब्रेक। स्टे विद अस। Welcome back to the Pavilion. मैं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं Sports and the Hour by Zap app. The news out really is that Bangladesh have won their game against Sri Lanka. Now this game has gone down well for Bangladesh, but there is a bit of a controversy there. The controversy happened today. पहली दफ़ा क्रिकेट की तारीख में, ODI की तारीख में, किसी बैट्समैन को टाइम आउट के तहत आउट दिया गया है। अब वो क्या है सिलसिला, सारे का सारा आपकी स्क्रीन पे दिखाते हैं, देखिए। राइट, सो दिस इज द सिचुएशन। ये हेलमेट पे ये अपील हुई, मजाक में हुई, नहीं हुई, कुछ समझ में नहीं आया। एंजेलो मैथ्यूज़ का हेलमेट चेंज हुआ, वो बात करते रहे मैथ्यूज़ अपने हेलमेट के हवाले से, थ्रू अवे द हेलमेट। ही वाज क्लियरली वेरी वेरी अपसेट विद दिस सिचुएशन, एंड देयर यू कैन सी दैट हैविंग अ वर्ड विद एवरीबडी। Just a very strange thing that it has gone down. Now, our producers, Wasim, tell me that इन्होंने टाइमलाइन चेक की है जो ICC की फीड पे आती है, जो रियल टाइम हमारे पास फीड आती है, जिसमें कोई ब्रेक या इश्तिहार नहीं होता। उसमें ये पूरी चीज़ जो उनको जब आउट दिया गया है वो 1 मिनट 50 सेकंड था। ओके, राइट, ओके। सो द श्रीलंकन कैप्टन सेड के 5 सेकंड रह गए थे, जो हमारी टीम ने कहा है कि तकरीबन 8-10 सेकंड रह गए थे। अगर हम जो टाइम आउट लॉ है MCC का 40.1.1 उसको अगर देखें, बट ओके 5 सेकंड्स और 10 सेकंड्स, दैट्स व्हाट द एम्बिग्विटी इज। शाकिब अल हसन ये कह रहे हैं कि सही है गलत है इसकी बात नहीं है तो कानून के अंदर, और कानून के मुताबिक हमने जो अपील की और वो बस थी अपील। और मैं जो था आई थॉट कि मैं जंग में हूँ, तो जंग के अंदर मैं अपनी टीम को जीतने के लिए एक बेहतर फैसला था, सो मैंने ये फैसला कर दिया। ऑलराइट, देयर यू हैव इट। आई लीव दिस फ्लोर ओपन फॉर ऑल ऑफ यू टू डिस्कस, दिस इज काइंड ऑफ वेरी सैड। इसका आंसर फेजेस में होता है। आई सपोज देयर लॉट ऑफ अभी आपने अंपायर हॉर्सेस माउथ से हमने सुन लिया, अंपायर से
दोनों कप्तानों से. BBC Sport जो कह रहा है वो कह रहा है when it comes to timed out, the incoming batter has to be in position to receive the ball within 2 minutes. The TV umpire monitors the 2 minutes and he will then relay the message to the standing umpire. In this instance, the batter wasn't ready within 2 minutes even before the strap became an issue for him. I think वो जो बात कर रहे हैं वहाँ पे, अब फोर्थ अंपायर ने तो क्लियरली कह दिया है ना कि वो इक्विपमेंट अगर ठीक होना ना होना ये भी बैट्समैन की जिम्मेदारी है. ठीक है, लॉ में लिखा है, ओके फाइन, बट वेयर इज़ द कॉमन सेंस? उसने यूं किया टाइट करने के लिए, तैयार था वो खेलने के लिए और वो स्ट्रैप निकल गया है. तो लेकिन इसमें क्वेश्चन मैं एक और ऐड करना चाह रहा हूँ. मैं एक क्वेश्चन और ऐड करना चाह रहा हूँ ताकि फिर उसमें और क्लैरिटी आ सकती है. देखें, शाकिब ने ये कहा कि मेरे पास फील्डर एक आया, उसने मुझे आके कहा अगर हाँ आइडिया दिया. तो शाकिब के पास तो फील्डर तब आया कि जब उसका स्ट्रैप गया, तो तब तो 3 मिनट से भी ज़्यादा हो गए हुए थे. वो विद इन 2 मिनट्स क्यों नहीं आया? सोचे इस बात को. अपील किया है ना वो फोर्थ अंपायर ने ये बात. एक्चुअली झगड़ा ये पड़ा हुआ है कि कब ये तो डिबेट हम करते रहेंगे. ये इस डिबेट का कोई आंसर नहीं आना, टाइमिंग हुई नहीं हुई. बट द मेन को एवरीबडी इज आस्किंग कि क्या साकिब को अपील वापस लेनी चाहिए थी या अपील करनी ही नहीं चाहिए थी. देखिए, हर कैप्टन की अपनी अपनी होती है. अगर मैं कैप्टन होता तो मैं कभी भी अपील नहीं करता. मेरे ख्याल में भी नहीं है. इट्स टू स्पिरिट ऑफ द गेम. या तो आपको कोई नुकसान हो रहा है, जानबूझ के वो डिले कर रहा है, आपकी ओवर डिले हो जाते, मैच के रिजल्ट पे कोई इफेक्ट हो रहा था इस चीज़ का, आपको कोई फाइन हो रहा था. देयर वाज नथिंग. ये तो वही रोने वाली गल होगी कि मतलब यू हैव बेसिकली यू वांट टू प्ले और प्रॉपर तरीके से आप आउट 10 सेकंड 15 सेकंड ऊपर हो भी गए, डजेंट मैटर. उसके बाद आप देखें स्पिरिट ऑफ द गेम, वेयर वाज द स्पिरिट ऑफ द गेम आफ्टर दैट? एक अजीब खिंचा हुआ माहौल था, एक दूसरे को देख रहे हैं वो, तो इट वाज ऑल मैक्सिमम क्या हो सकता था? मैक्सिमम एक चीज़ हो सकती थी उनके, ये जो भी, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है. एक चीज़ हो सकती थी कि 40 ओवरों के बाद या वो पीछे होते या कुछ होते, एक फील्डर अंदर लाना पड़ना था. लेकिन जब ऐसा इंसिडेंट होता है तो अंपायर्स क्या करते हैं, वो टाइम को रोक देते हैं. बिल्कुल, वो टाइम स्टॉपेज आ जाता है. तो ये मैक्स हो सकता है. बैट्समैन के खाते में आता है. Shoaib Malik, you said you would not appeal. I would not appeal. Misbah, you said you would not appeal. I think it was. Wasim, as a captain, would you have appealed? Depends. I've been truthful. Depends on the situation. टीम कौन सी है, सिचुएशन क्या है. बट इन जनरल इफ लुक एट द बिगर थिंग्स, मेरे ज़हन में ये बात ना आती. Moin, would you have appealed? आई थिंक ये मेन फील्ड पे लेने वाला डिसीजन होता है. आई थिंक वो लीगली उन्होंने डिसीजन ठीक लिया. कोई भी होता, अगर उसकी टीम का मैटर होता, विनिंग और लूजिंग मैटर कर रही होती उस वक्त, उन्होंने क्लियरली ये बात बोली है. आई थिंक इट वाज गुड डिसीजन. मैं होता तो शायद मैं भी ले लेता. आप भी लेते? क्यों नहीं लेते? So you have basically two guys that say we will not have appealed. Skip says that circumstances could. Because it has happened to me once. Oh, it has. Yes, not similar kind of situation, but ऐसे time out नहीं हुआ to take a decision back. Okay. It was a famous test in Kolkata, at Kolkata against India. Sachin was playing well. He was on 30 odd if I remember. उसने शोएब अख्तर को शॉट खेली. मैं एक्सप्लेन कर चुका पहले भी आपको ये. मिड विकेट की तरफ. नदीम खान was the fielder, only guy at mid on, so he ran towards mid wicket. एंड वहाँ से जब सचिन तीसरे के लिए आया, एंड शोएब वाज काइंड ऑफ, इफ द स्टंप्स वर हियर, शोएब वाज समवेयर हियर. ये सचिन उधर से आ रहा है, शोएब वाज काइंड ऑफ हियर बैकिंग अप, बॉल उधर से आना था. अब सचिन आया है इधर से, वो आके टक्कर लगी है उसकी शोएब को, और वहाँ से डायरेक्ट हिट लग गई है. और सचिन वाज नॉट इन द क्रीज, एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ इट वाज अ फ्रीक एक्सीडेंट, nobody's fault, and he was given run out. Right. And the match referee, I remember his name, Cammy Smith, West Indian, he was there. And I think indirectly asked me, would you like to take the appeal back? I said, look, if it's within the laws, if this Sachin is outside the crease, and if he's out, then I'm not taking my appeal back. But if you tell me as a referee, okay, this is not on, take the appeal back, I would. He said, no, if this is within the law. ओके, फेयर इनफ. चीज़ आप ज़रूर करते हैं. आई एम श्योर वसीम भाई आपके साथ बहुत खेले हैं, क्योंकि जो शोएब भाई थे उनका फेस यूं था बॉल की तरफ.
जो सचिन थे वो भी बॉल की तरफ देख रहे थे, But that's true. तो किसी का कोई कसूर नहीं था। नहीं था। लेकिन अगर किसी ने कुछ ऐसे जानबूझ के हल्की सी कर देते हैं ना, तो आप जरूर वापस ले फिर तो लेते हैं। वापस ले लेते हैं। दूसरा वो ऐसी Just to make it very match की clear, situation भी so कुछ what I think this is very important to make clear. आपने अपील को इसलिए इंटैक्ट रखा क्योंकि कसूर नहीं था किसी का, नहीं। वो डिलिबरेट नहीं था शोएब अख्तर की तरफ से, वो एक एक्सीडेंट था क्योंकि एवरीबडी वाज लुकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉल। सो सचिन पीछे से भागते हुए आ रहे हैं, शोएब ये नहीं कि शोएब ने पीछे देखा सचिन कहाँ से आ रहे हैं, उनके रास्ते में आए। सो कि दैट आई थिंक इज अ फेयर कॉल, बट हियर आई थिंक द सर्कमस्टांसेस आर लिटिल डिफरेंट इन दिस इंस्टेंस, एंड इफ यू वर इन दिस वेरी सिचुएशन, nothing else, forget everything else, this situation जो अभी आपने देखी है श्रीलंका की, would you have अगर मेरा लड़का मेरे पास आता अपील करो, मैं उसको 2-1 सुनाता हल्की सी। There you go. I know you. Focus on your That's the game. man that you are. That's what I'm saying. That when you are the fox, of course, so you would look for the opportunity and go for the kill, right? So you would always go. But I understand that. Having, I mean, this is the way it is. I think the सबसे important चीज़ ये है कि वो जो मामलात बाद में खराब हो गए ना, उनकी आपस में गर्मा गुरमी शुरू हो गई सबकी, वो नहीं होनी नहीं आई, चाहिए। हैंडशेक नहीं हुआ, इट्स अ Handshake. वर्ल्ड कप, इट्स ओनली अ गेम, एंड ऑफ द डे। Also, let us not forget, क्योंकि मैं अभी देख रहा था ट्विटर पे, एक्स के ऊपर, somebody has shared an incident where शाकिब अल हसन on a domestic match, उन्होंने बॉल किया है, अपील किया है, एम्पायर ने अपील टर्न डाउन की है, एंड ही किक्ड ऑल द 3 stumps. So he's got. तूने आज देखा है तूने? मैंने अभी देखा है उसको, but तो बहुत but गुस्से मशहूर थे हुआ है. इसके भैया। So then that goes to say, because today at one point Shakib Al Hasan said that no, it's the umpire's decision. What can I say, right? So he's disagreed with umpire's decisions in the past. You can clearly see, जब वो इस सवाल का जवाब दे रहे हैं तो you can clearly see कि वो confidence नहीं है, Body language जो है वो कहीं ना थोड़ी कहीं सी- अंदर उनको फील हो रहा है कि यार ये काम ठीक नहीं हुआ। I think the amount of incidents I've seen in Bangladesh as well. Yeah. बहुत सारे young बच्चे देख रहे होते हैं. Let's not discuss this. Yeah. To all the young minds जो कि देख रहे हैं इस वक्त और वो है. Look, you've heard this. You've heard what the captains had to say. I think one of the most important thing is it's a beautiful game. Love the game, respect the game, and keep it intact in its true spirit. And wherever you end up in an opportunity or a situation like this, make sure that you hold the higher ground and take a decision that you would be proud of in the years ahead of your life. I think that's the best way to go about it, और right? वैसे भी बॉल और बैट की बैटल से जीतना चाहिए। वर्ल्ड कप का फाइनल भी हो, ऐसा कुछ आ जाए, मेक श्योर डोंट अपील। There you What go. about the changing the rule? That's also one way of looking at it. ICC should maybe एंड reconsider this. एमसीसी का जो लॉ है वो है 3 मिनट्स, जी, 3 मगर आईसीसी के इसमें वर्ल्ड कप के जो रूल बुक में है वो 2 मिनट है। क्यों ये क्यों है? सुपरसीड करते हैं, उन्होंने देखिए बताया क्यों था का fourth जवाब umpire ने तो आपको। हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। अरे वो कौन है हकीम लुकमान? तो मेरे को लोग पूछ रहे हैं तुम। क्यों वसीम क्यों कई दफा लॉज जो मर्जी हो, पूछ देना वाई लॉज जो मर्जी हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ कॉमन सेंस डिफरेंट कुछ कह रही होती है, तो ये कहीं ना कहीं ज़रूर लॉज में भी ये होना चाहिए। वही अब 15 सेकंड या 10 सेकंड की वजह से नथिंग इज गोइंग वो ऑन। कहते हैं ना कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन. दैट्स अनदर इशू दैट वो तानू दे भाई, एक सेकंड अंपायर को अगर इमरजेंसी आ जाए वॉशरूम जाने की तो मैच रुक सकता है। आप अंदर खड़े वो हैं। फोर्थ अंपायर आ जाता है नाउडेज। हाँ, बट फिर भी वो टाइम तो लगता है ना बीच में। या दैट्स रियली रैंडम Yes. क्वेश्चन बट श्योर। मलिक साहब तो छा गए आज. नहीं, प्लेयर भी जा सकता है अंदर, प्लेयर भी जा बैटिंग सकता है, कर रहा है, प्लेयर वो भी जा सकता है। भाई सब लोग ब्रेक ले सकते हैं मैच के बीच में और हम प्रोग्राम के बीच में तो लेते हैं एक ब्रेक. Welcome back to the Pavilion. मैं Fakhar-e-Alam, आप देख रहे हैं Sports and Sports and the ARY Zap app, our continued coverage of the ICC Men's World Cup. And well, we were discussing before the break about the unfortunate incident. अब से कुछ लम्हे पहले Angelo Mathews की प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई है जिसमें उन्होंने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं शाकिब अल हसन के लिए. Very unfortunate. As we said, it's just an unfortunate thing. Shouldn't be happening at this level. Having said that, here's a question for you gentlemen, all of you, because this has been going around a lot. And चूँकि ये हमारी तीसरा लगातार वर्ल्ड कप है जो हम कर रहे हैं पेविलियन में वसीम, there has been a lot of questions on a lot of the DRS decisions that have come about as well, right? I mean, this is a conversation जो होती है. Of course, वो fans जिनकी टीम के हक में क्या होता है फैसला, they're fine with it. जिनकी टीम के हक में नहीं गया होता वो काफ़ी नाराज़ होते हैं. But as just cricket experts,
when you look at some of these DRS decisions, are you happy with it? And I'll give you one small example. There's a lot of talk about the decision of Jadeja's bowling yesterday against South Africa. एक decision है. So what do you guys think? Do you think DRS is absolutely foolproof and that technology is 100%? Look, are you happy with the results that are coming about? Some decision definitely look odd when you look at it the naked eye. जब replay दिखाते हैं, Hawkeye दिखाते हैं, but it's for both sides. ठीक है. So अगर वो 100% नहीं है, but पूरी दुनिया की क्रिकेट ने, बोर्ड्स ने, ICC ने, MC सब ने agree किया हुआ उस पे, it's there. कई दफ़ा ठीक होता है, कई दफ़ा गलत होता है, I suppose, but it's for the both sides. Let's leave it at that. I mean, ठीक है, अगर मुझे एक डिसीजन पसंद नहीं है, मुझे लग रहा है कि ये डाउन लेग है, and suddenly Hawkeye दिखा रहा है कि हिटिंग क्लिपिंग लेग है, so that's my own opinion. Fair enough. And mostly आजकल जो ये कंट्रोवर्सी में पड़े हैं, ये हमारे भाई लोग ही पढ़ रहे हैं ज़्यादा. और दूसरी बात ये है कि वसीम भाई, टेक्नोलॉजी इज़ देयर टू बेसिकली हेल्प एलिमिनेट करना वो जो ब्लंडर्स कई दफ़ा हो जाते हैं, मिस आउट हो जाता है कोई इतना बड़ा डिसीजन और गेम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है. ये जो 50-50 वाले डिसीजंस फिर आ जाते हैं, तो ये तो ह्यूमन एरर भी होगी. जब अंपायर खड़ा होगा कई दफ़ा वो भी क्लियरली नज़र आ रहा होगा, मिसिंग है, आउट दे देगा. कई दफ़ा ऐसा उसको लगेगा कि ये आउट नहीं है, आउट होगा, तो ये तो वहाँ रहेगा. बट अगर इन द लॉन्गर रन इसको देखें तो कहीं ना कहीं वो जो मिस्टेक्स हैं वो कम तो होंगी इससे. कहीं आपको ऐसा डिसीजन एक आधा नज़र आएगा, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है अगर मिस्टेक्स कहीं 50% या 60% भी बेहतर कर रहे हैं हम, तो एटलीस्ट मैच फिर भी वो फेयर एंड स्क्वेयर चांसेस मिल रहे हैं दोनों टीमों को. Do you know Hawkeye is the only one company in the world? There's no one else. So why is that? Because right. ICC doesn't allow anybody else or accept anybody else's So I technology? think ये technology or सिर्फ उन्हीं के पास है. nobody else with that technology, and do they have a international patent on the technology that nobody can actually recreate the technology? बेसिकली क्या हुआ है, बेसिकली ये है कि ह्यूमन एरर को उठा के टेक्नोलॉजी पे डाल दिया ताकि हमने तो नुक्स निकालने. तो बेसिकली ये हुआ है. ठीक है, मैं बड़ा अच्छा जो है रिव्यू दे सकता हूँ कि नूर अहमद का बॉल फुल टॉस लगा था उस दिन, तो शाहिदी ने बोला ये गुगली है, ये टर्न हो के स्टंप्स में जाएगी अगर बीच में लगी है, और वो बीच में लगा था बॉल. कल जडेजा का बॉल लगा है, ठीक है, वो लगने के बाद क्योंकि वो थोड़ा सा दूर गिरा हुआ था तो वो हल्का सा ब्रेक हुआ है, ब्रेक होके वो सीधा स्टंप्स में चला गया. अगर हम ये दो दिखा सकें तो मैं बड़ा अच्छा एलेबोरेट कर सकता हूँ इस चीज़ को कि टेक्नोलॉजी इज नॉट 100%. It's not perfect. No, it's not perfect. It is not perfect. The Hawkeye, this DRS is not 100%. So 97, 98% something. Not even that. बेहतरीन इसको It's not even that. 97, 98%. उसको आप आउट दें. जो अंपायर्स के ऊपर चल रहे थे, अंपायर्स कॉल वो नहीं होना चाहिए. उससे प्रॉब्लम्स आती हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आई थिंक दैट इज ट्रू दैट वो नहीं होनी चाहिए. टूर्नामेंट कहते हैं कि 4-5 इस तरह के डिसीजंस होते हैं. नहीं, हम तो पिछले 2 वर्ल्ड कप्स में यहाँ पे करते रहे ना. पिछले 2 वर्ल्ड कप्स में भी बहुत सारे डिसीजंस ऐसे आए हैं. एक वो फुल टॉस था वेस्ट साइड से ऊपर, वो नहीं दिया गया मसलन किसी मैच के अंदर. कॉस्ट इज द मैच दैट साउथ अफ्रीकन मैच. इसके लिए आप ये भी तो कर सकते हैं ना कि अगर आपको लगता है कि होका है आपको सही नहीं दिखा रहा, तो जस्ट लीव इट टू थर्ड अंपायर. वो सिर्फ उसको वो पिच वो जो मैट होता है उसको देख के, वो रीप्ले देख के, स्लोमो में देख के वो जो डिसीजन करे उस पर कर दे. आप क्यों दिखाते हैं हॉका है जब आपको थर्ड अंपायर सिंपली कर दें. अच्छा, उसमें ये कर देंगे क्लियरली इफ द बॉल इज हिटिंग आउट, अगर थोड़ा भी डाउट है ओके बैट्समैन. I was wondering ऐसा करना पड़ेगा. how come टेक कंपनीज दुनिया में कितनी बड़ी हैं. जी. इंडिया ले लो तुम, अमेरिका ले लो, इंग्लैंड ले, wherever in the world. How come nobody else is coming up with this technology? That's what I'm saying. Maybe they hold an international patent. Maybe. If they have a patent, then nobody else can do. Maybe that's the only logical explanation to this whole thing. Talking about technology, gentlemen, I'm going to share in the next few days. I'm trying to get more details. लाहौर में एक नौजवान ने एक टेक्नोलॉजी बनाई है, एक ऐप बनाई है जो बॉलिंग मशीन के साथ आप उसको अगर कपल कर दें तो वो बैट्समैन की जो टेक्निकल मिस्टेक्स होती हैं वो AI के थ्रू आपको आपका पूरा सेशन रिकॉर्ड करके आपको बताती हैं, समथिंग लाइक दैट, कि आपके मतलब व्हाट इज द टेक्निकल मिस्टेक. वी गोना टॉक अबाउट दैट लेटर, बट राइट नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू. But apparently technology has reduced the margin of error but can never be 100%. Okay, so that is the way it is basically. All right, Moin, what do you think Misbah should say about the way forward for Angelo Mathews now?
जो श्रीलंका के लिए सही जवाब दें यार। आखिरी मैच खेलना उन्होंने, हाँ। उस पर फोकस करना चाहिए क्योंकि हम बिल्कुल उन पे डिपेंड कर रहे हैं। Yeah, actually. जितनी आज गर्मी उनको चढ़ी है, गुस्सा चढ़ा है, वो सारा जो है ना अगले मैच के लिए संभाल के जैसे आज अगला मैच जीतेंगे जीता अगला मैच हाँ, ये बिल्कुल हिसाब बराबर करके जाए ना बिल्कुल इसके अंदर। And with that we're going to take a break here on the Pavilion, but when we come back it's time for your favorite segment #AskThePavilion। अपने पैगामात हमें भेजना शुरू कर दीजिए, अपने सवालात, and we'll see you after the break। Welcome back to the Pavilion, and I'm joined by four former captains of Pakistan: Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan, and the great Wasim Akram. And it's time for your favorite segment, #AskThePavilion, and let me get straight into it. पहला सवाल, Hamza Shergill, आपका X handle है Hamza Shergill. Can anyone from you guys explain the DLS method in easy words? How does this method work? I tried to understand it on YouTube, and as a good student of mathematics, I truly felt like a backbencher there. क्या नाम बताया था? Hamza Shergill. हमजा, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। आपको अब लग रहा है बैक बेंचर, आपको समझ नहीं, हम तो पिछले 25 साल से लग रहा है बैक बेंचर है जब से डीएल आया है। बट आई सपोज ड्यूरिंग द गेम क्या होता है कि वंस द इनिंग्स इज फिनिश्ड बिटवीन द ब्रेक, अंपायर थर्ड फोर्थ अंपायर जो होता है जरा सैर कर रहे होते हैं इधर उधर, वो आता है, वो दोनों टीमों को शीट देता है, एक हमें देगा, एक कॉपीज़ देगा 2-3, एक देगा दूसरी ऑपोजिशन को, और उसमें लिखा होगा कि एक ओवर में आपको 10 रन चाहिए, एक विकेट गिरी तो 15 चाहिए, तो 50 ओवर का हिसाब उसी वक्त आपके सामने ऐसे पेपर में आ जाता है। हैंस तो हमें उसकी समझने की ज़रूरत नहीं है, बट इट्स क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड आई बिलीव, एंड यू आर स्ट्रगलिंग राइटली सो। Because all four captains here have been struggling. They don't know the method. They just get the sheet. We follow the sheet. जिन्हें बनाया उन्हें भी नहीं समझ आई थी। तैयब इरफान आपका एक्स हैंडल है तैयब इरफान। आपने लिखा है, I have an answer for you guys. As you asked Wasim bhai about the ICC has a different rule, a different time rule than MCC. It's because ICC rules are influenced by broadcasters, and a lot of cricket rules have been changed to make ways meet broadcasters' terms. But in my cricket watching experience and playing at different levels for the last 10 years, if a batsman has made crease, oftentimes see them adjusting gloves, stretching, etc., 2 minutes. Well, anyway, the bottom line that I think Tayyib Irfan is saying is that ICC rules are different from MCC rules because ICC rules accommodate the broadcasters. I think that's a very good thing. Dr. Umar, आपका एक्स हैंडल है डॉक्टर उमर वहाब। आप कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, ऑल लेजेंडरी कैप्टन्स रैंक्ड फर्स्ट इन डायबिटीज प्रेवलेंस। पाकिस्तान इज रैंक्ड नंबर 1 in terms of diabetes prevalence all over the world, which is very alarming. My request is from my legend and motivator for any diabetics all over the world, Wasim bhai. Kindly give मतलब क्या हुआ, मतलब इट मींस के इसका प्रेवलेंस का सबसे ज्यादा डायबिटीज की बीमारी प्रेवलेंस मींस के रोकना ना प्रेवलेंस इट प्रिवेल सबसे ज्यादा प्रिवेंट करना ना प्रिवेल करती है सोसाइटी में सबसे ज्यादा फैली हुई है। ये सबसे ज्यादा हावी है, प्रिवेल कर रही है, हावी है। ठीक है, तो डायबिटीज की बीमारी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हावी है। तो वो ये कह रहे हैं कि आप जरा प्लीज मोटिवेशनल मैसेज दे दीजिए एक दफा सबको। डॉक्टर उमर वहाब आपको कह रहे हैं, डॉक हाउ आर यू? आई नो डॉक वेरी वेल, आई वेंट टू हिज क्लिनिक, वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिक्स इन इस्लामाबाद, वन स्टॉप शॉप डायबिटिक्स के लिए। मैं डॉक पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि पाकिस्तान में जो नॉन डायबिटिक ऑफिशियली जो हैं वो 35 to 36 मिलियन हैं, ये नॉन हैं। ये 2-3 साल पहले शायद सर्वे हुआ था, अब ऑब्वियसली ज़्यादा हो गए होंगे। दैट्स ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑफ आवर पॉपुलेशन, एंड मोस्टली इज़ टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 इज़ लाइफ स्टाइल, एंड जेनेटिक भी होता है बट मोस्टली लाइफ स्टाइल। आजकल के दौर में सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, आउटडोर स्पोर्ट्स कम हो गई हुई हैं, एंड देन वेट, and then unhealthy eating, no exercise, जितनी कैलोरीज खानी है उतनी बर्न करनी है वो कोई सिस्टम नहीं है। स्पेशली हमारे गांव वगैरह में जहाँ पे अवेयरनेस की इतनी कैंपेन्स नहीं चलती। अगर कैंपेन्स मैंने देखी भी हैं तो मेरे जो रॉश हैं, ये वो नोडिस्क हैं, ये बड़ी कंपनीज़ हैं पाकिस्तान में, चलाती हैं कैंपेन, बट थोड़े टाइम के लिए चलाती है। स्पेशली सेकेंड टियर सिटीज़, गांव, शहरों में तो लोगों के पास डॉक्टर्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, बट गांव वगैरह में नहीं हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा है। एंड ऑल्सो द डायबिटीज़ देयर इज़ नो पेन, एंड दैट्स व्हाई हेंस यू हैव अ हेडेक, यू हैव टमी एक, यू हैव arm ache, whatever, you go to a doctor.
इसकी पेन नहीं है, some when you find out sometimes it's too late. Too late. So the whole family also has to know what diabetes is. Yeah. जब डायबिटिक पेशेंट आपके पास है तो पूरी फैमिली को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्या है. Yeah. ये नहीं कि वो दादा अब्बू को मिठाई का बड़ा शौक है, चुपके से 6 गुलाब जामुन खिला दिए. That's not gonna work. He's hiding. He's hiding his face. जी मैं तो कुछ नहीं किया. दादा मेरे तो अब्बू क्यों तो नहीं ने फिर आहो भी एंजी छड़ आपका मतलब ईटिंग हैबिट्स अच्छी है ना. मेरी तो बहुत हेल्दी. आपको पता है मैं हेल्थ कॉन्शियस आदमी हूँ. वसीम आपसे शदीद अल्लाह करे इंस्पायर्ड हूँ आप मैं. सेहतमंद रहें, अल्लाह करे सारे सेहतमंद रहें. आमीन. थैंक यू. रबड़ी के साथ बड़ी कंटेनर मंगा रबड़ी के खाई तू सी वीडियो इच रहने दे उन मैं तो 2 चम्मच ले सी तुसी भाई जान 7 कटोरे का खौफ कर मिसबा 2 चमचे लिए किस्म थे. की तो बातें कर देते ये 2 चम्मच थे. 2 पता है कौन से वाले और जिसे डालते हैं वो बड़ा चमचा नहीं होता. ये ना जो इसको देख किस तरह मेरे पे मलबा डाल दिया सारे के नहीं, आप सारे. दोनों ही ऐसे हैं. चलो ठीक है. थैंक यू वेरी मच. शोएब मलिक रुक जा. तेनू असी अलग कमरे च लब्बांगे. रुक जा इन्होंने भाई मिसबा इसको ठीक करना है हमने ले जाके भाई पीछे. मोहम्मद आतिफ सलीम का सवाल है वसीम भाई. पंजाबी मैंने देखा है, पंजाबी रोमन है थोड़ी सी मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ. वसीम भाई से सवाल है मोहम्मद आतिफ सलीम का. आप कह रहे हैं वसीम भाई ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਜ਼ਰਾ ਬਿਸਤੀ ਬਿਸਤੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ. ਨਹੀਂ ਬਿਸਤੀ ਘੱਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਚਵਲ ਵੱਜ ਜਾਏ. यार मोहम्मद आतिफ सलीम, that's one of the most cutest message that we've received. So now I can understand. वसीम भाई ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ तो ज्यादा बेइज्जती ना कर दो. ठीक है ना. ये किसी को चवल बच जाए थोड़ा सा हाथ हौला रखा करो. नहीं तो ये हम देखते नहीं करने है. हम देखते हैं ना जब मोइन भाई वसीम भाई को तंग करते हैं. I know guys. तुम्हें एक दिन पता लगना है कि मोइन की बोरी बंद लाश मिली यारी नदी के पास. अल्लाह ना करे. अकेला मेरे साथ ही जाता है. ये वो एक्चुअली वसीम भाई का एक जोन है. वो जोन का नाम है kodababa.com. ठीक है ना. वो ये जोन में चले जाएं तो गुड लक टू ऑल ऑफ यू. बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आस्क द क्वेश्चन. भाई मैं इतने जा रहे हैं तुसी ब्रेक लो. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं Sports and the Hour by Zap app, and it's #AskThePavilion, and we've had some very interesting conversations. Areej Leo 384, आपका सवाल है, how is it that you guys get to roast each other and still be okay the next day? It seems like there is something that we don't understand. Please explain, how can you make fun of each other so viciously and still be smiling about it? That's a very interesting question. You guys should answer. कोई बच के जाता ही नहीं है. कोई बच के नहीं जाता. इंस्पिरेशन है ना. सीरियसली वो वसीम भाई. Yes, he is the senior most and he just make the atmosphere very easy for all of us. इस वजह से बहुत मजा आता है. Thank you very much. Enjoy each other's company and respect each other. वो मजाक उड़ाना तो फिर टाइम कैसे गुजरेगा 1.5 महीना. नहीं तो दोनों हम सब ने तलवारें छोड़े ना निकाले होते भाई ना. वैसे ही निकाली हुई. इसके बाद इधर तो लोग तैयार बैठे हुए सारे के सारे. Yeah, this Reach, thank you for your question. This comes out of a lot of love and mutual respect for each other, and we definitely enjoy each other's company, all of us. अपनी जगह लेकिन रास्ता भी तो सही बताते हैं मोइन. अभी मैं बता ही दूं, मोइन पिछले मैं 1 महीने से मेरे साथ आ रहा है. मैं पहले बता चुका हूँ. आगे पीछे रहते हैं सड़कों पे, और जब भी आते हैं कभी कहते हैं पान इधरों चले जाओ, कभी कहते हैं इधरों चले जाओ, कभी कहते हैं नॉर्दर्न बाईपास ना चले जाओ, कभी कहते हैं सुराब गोट ना चले जाओ. एवरी डे. उसका मेन रीजन है ना, आप खुद लाहौर से हैं, आपको रास्तों का नहीं पता, इसलिए गाइड मेरा ड्राइवर है. थोड़ी खैर हो जाए. आज क्या किया है? आज वसीम भाई की थोड़ी तबीयत सही नहीं थी तो सुबह नहीं आए वसीम भाई, तो वॉइस नोट कर दिया मोइन भाई ने, वसीम भाई अगर आप ट्रैफिक में फंस गए तो ए वाला रास्ता ठीक है, इधर आ जाओ. मेरा अब ना सुनाई मैसेज जो मैंने भेजा. नहीं हमने सुना था, बड़े हिलेरियस भाई जो मैसेज आपने भेजा है. अली राजा आपका एक चैनल अली राजा है, कहते हैं फैलम बॉस घास डाल दें, वाज योर नेबर एट शादमान रेजिडेंसी, बिग फैन, थैंक यू वेरी मच, अमेजिंग जॉब यू गाइस आर डूइंग, प्लीज कीप दिस गोइंग, थैंक यू वेरी मच लव, वी अप्रिशिएट दैट. ऑलराइट, सो we have another question that has come in. Wazir Ahmed _381. Wazir Ahmed, आप कह रहे हैं, gentlemen, my sincerest appeal to A Sports and the president of A Sports, Wasim bhai, please keep Pavilion on after the World Cup. जी भाईजान, ए दसो जवाब दियो इधर.
वजीर भाई को? बेटा कारकुट छड़ के बच्चे बुच्चे फिर दे दिए किसी और नू तो फिर इत्थे आ जाने हैं. नहीं, the idea is that this show is a hard work. Everybody, not just 5 of us. There are about 50, 60 people, even more behind the, this show. The cameraman, the production, हमारा director, उसकी team थी इसकी, फिर light वाले, the क्या उसे audio वाले, and everything. So कोई series होगी या कोई बड़ा वो match होगा तो उस पे हम क्या करेंगे? Every week would be 2 balls because we all live in different part of this country, beautiful country. He lives in Dubai. इंटरनेशनल. और वैसे भी सुबह उठना जो है ना उसी में आप तो फ्रेश उठ जाते हैं. मैं तो उठ जाता हूँ. एक्चुअली हाथ धो के फ्लैश हो जाते हैं. हाँ, हाथ धो के फ्रेश हो जाते हैं. कल भी वैसे मैच है, आपस की बात है. अच्छा तो करिए फिर. मैंने इतनी बिस्तरे ला लो. इतनी बिस्तरे ला ली है. That's very doable. We'll take a break. When we come back, we have something else. Welcome back to the Pavilion. आप देख रहे हैं Sports and the ARY Zap app. And with me in the Pavilion, I'm joined with Shoaib Malik, Misbah, Moin Khan, and Wasim Akram. I have one question from Faiza Akhtar. Assalamu alaikum, Faiza, kya haal hai? The best show with the exceptionally talented host Fakhar-e-Alam. Wow. I'm a huge fan of your hosting skills since long, and your unforgettable rap song जो आप रेंगते थे, ये मैंने बनाया है. The famous आओ जी आओ पंगड़ा पाओ. आओ जी आओ पंगड़ा पाओ. So please make a rap song on the great Wasim Akram's poetry. Hoy. That's a very Faiza, I like it. Faiza, you know what? I appreciate what you've asked for, but here's the situation. That poetry, ये तो दीवाने अकरम है, ये खास है. इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर रैप नहीं किया जा सकता. The चिट्टा टट्टू can only टपूफाई कोडी once, right? And टप चिट्टे टट्टू, I ain't taking that risk. And पिद्दी भूलचो ने, I'm not taking no risk with any of that, Wasim. I see the trap that is being set for me. I see इधर आए ये वसीम अकरम की कैमरे में. I see the trap that this man is trying to set up with you. It was Faiza. Faiza, yes, but his poetry, only he can, it's in his heart, only he can rhyme that. I'll give you rights to do it. No, I don't want the rights. At least work on it. Yeah, we can all work on it together. We've been working on it together. आजकल तो हर कोई रैप ही गा रहा है ना. Yeah, okay. Actually, this is really good. I want you to listen to Wasim does a fantastic rap song. You're a rapper. Why do I do rap? You start, I'll finish. No. Oh, you start, I'll finish. अच्छा. बहुत चलो जो आजकल जो रैप हो रहा है, तू मेरे पास आ, मैं तेरे साथ जाऊं, तेरा अब्बू आएगा, तेरी अम्मी से पूछेगा तू मेरे घर आवे जा. कुछ ऐसे ही गाने हैं आजकल. कुछ ऐसे ही गाने हैं आजकल, right? That's just hilariously. Skip. That's too good, man. That's too good. तूने तो खत्म करना था आगे से. मैं खत्म नहीं. This is not the kind of rap that I did. So what? I did something like, come on everybody, आओ पंगड़ा पाओ, पंगड़ा fashion है, आओ ना put your hands up in the air with me. नाल सोनी कुड़ी from Lahore, the city पाजी आओ मेरे नाल तो सिवी. Together we'll put पंगड़ा fashion free. मैं rapper slammer है मुझे. मैं पंगड़ा jam जी. तारों की मालूम के पंगड़ा की. So the heart of the people of Punjab, this is I'm a पंगड़ा addicted human being. Without पंगड़ा जी ना है मुश्किल extreme. Good night, Shoaib. Good night, Moin. Good night, जी बंदर. Good night, Wasim. Good night, जी. Here's the match we have in store for you tomorrow. Good night, जी बंदर. Australia versus Afghanistan. And this match is 1:30 p.m. tomorrow, 7th November, live from Mumbai. हम आपकी खदमत में हाजिर होंगे 12 बजे. And with that, again, once more, thank you, gentlemen. Thank you, Skip. Great. Love you, man. That's like always fun to have you here. And thank you, Faiza, for that very, very awkward moment that you gifted us on the Pavilion. And with that, all I can say is, Pangra Pao, good night.